Farhan, and the title is The Glacier's Lifeline of Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good evening, my respected teachers, fellow colleagues, and my dear students. I am Suhaib bin Farhan, and first of all, I would like to thank the organizing committee who invited me here at this prestigious forum to present something about my research. Before starting this presentation formally, I would like to briefly introduce myself. I am a student of this Department of Geography, and I did present why glaciers are important, or why I call it the lifeline of Pakistan. So I would start my presentation from what is the importance of glaciers for Pakistan. Then I would discuss about what is the current status of glaciers under the impacts of climate change in our region, and then in the end I will discuss something about how do we study glaciers. Currently I am working in Suparco since past 14 years as a general manager, so I do my research mainly in Suparco. Please next. So first of all, I would like to briefly introduce about the Indus River Basin. इसमें title थोड़ा सा नीचे कर ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर. So basically we are all geographers here, and we are a student of GIS and remote sensing. So why do we study remote sensing and GIS? In the previous presentations we have already seen and understand many things about it. So if we talk about the water resources of Pakistan, we have lot of water resources. It starts from the glaciers, perennial snow and ice, rivers, seasonal snow cover. We have a huge irrigation network, and in this picture you can see the main Indus River Basin, which is around 1.1 million square kilometer, and it lies in Pakistan, Afghanistan, India and China. So why glaciers are so important for us? If you see in this map, you can see it is the whole Indus Basin, and the upper part is called UIB, Upper Indus River Basin, and most of our water comes from Upper Indus River Basin. So next. So it is the map of Upper Indus River Basin. You can see our Indus River starts from the China, Tibetan Plateau, and then all of its waters come in Tarbela Dam. So more than 70% of the flow of UIB comes from the glaciers and snow melt. And as you may know, Indus River system is the main source which provides us the water. And since being the agricultural based economy of Pakistan, we relies on it for this domestic use or any other purposes. So how much glaciers we have, or what are the glaciers? The glaciers is basically the ice mass which flows under the gravity. I think many of you have seen a glacier. Like if you go in Pasu Valley or in Gilgit-Baltistan, you can see many of the glaciers on the way, like Pasu Glacier and Batura Glacier. You can see on the way. In the next slides, I will show you some pictures of the glaciers and the video in the form of documentary, so you would better understand what are and how the glaciers appears on the Earth's surface. So from here you can see this blue color is representing the glacier ice mass. We have more than 6,668 glaciers in Pakistan, and one of the world's largest glaciers. We have like Siachen Glacier, Biafo Glacier, and many more other glaciers. If I talk about the water which is stored in the glacier, I will give you an example of Biafo Glacier. And Biafo Glacier has an ice mass of around 120 cubic kilometer. And if you compare it with the Tarbela Dam, total capacity of Tarbela Dam, it is only about 13.7 kilometers. So you can see that how much ice
stored we have in our northern part of Pakistan, which is around 1300 to 200 cubic kilometers, which is lies in this region. Please next. Next. क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, आप लोगों ने बहुत सुना होगा क्लाइमेट चेंज के हवाले से कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज क्या इम्पैक्ट रोल प्ले कर रही है, सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स डिप्लेट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग बढ़ रही है. तो बेसिकली हमारे रीजन के अंदर क्या हो रहा है, अगर हम अपने रीजन को कंपेयर करते हैं लाइक इंडस को, गैंजिस या ब्रह्मपुत्रा या यांगजी जो है हमारे सराउंडिंग में हमारे बड़े बड़े बेसिन हैं, तो इंडस रिवर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट से, क्योंकि ये वो बेसिन है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आइस और ग्लेशियर मेल्ट का फ्लो कंट्रीब्यूट करता है एज कम्पेयर टू अदर लार्जर रिवर बेसिन इन द रीजन. नेक्स्ट स्लाइड. दिस पिक्चर शोज द आइस मास बैलेंस in our region. From here you can see Bhutan, Nepal, and then India. It is Eastern Himalaya, then we have Western Himalaya in Pakistan and in Karakoram. So you can see the red and yellow color is showing the retreat of glaciers. Many of the glaciers in this region have been retreating, but if you talk about the glaciers of Pakistan, particularly Karakoram glacier lies over here. These glaciers have contrasting behavior. Although the temperature have been rising for the past few decades or even the century, but the glaciers over in Karakoram are currently unstable. They are not retreating like the glaciers in other part of the whole globe or the whole globe like in Eastern Himalaya or in even Western Himalaya. So luckily until now the glaciers have been stable or even increasing in Pakistan, not retreating like in other parts. Please next slide. सो रिमोट सेंसिंग की कुछ एग्जांपल्स हैं किस तरह से ग्लेशियर नज़र आते हैं. वाइट कलर से हाई रिफ्लेक्शन के अंदर आपको ग्लेशियर्स यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे. ये 1973 का इमेज है, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू इमेजेस ऑफ लैंडसेट. यू कैन सी, प्लीज नेक्स्ट. एंड नाउ इन ईयर 2020 यू कैन सी द चेंजेस इन ग्लेशियर्स ओवर द पास्ट 40 or 50 odd years. Please next. I will go fast because I have several slides to show, but there is a limitation of time. In Suparko we have developed the first glacier inventory of Pakistan, which has more than 6,668 glaciers, which shows about everything about glaciers, about its area, about its hypsometry, about its slopes, its classification, which type of glaciers we have, how long they are, how much ice they have stored, everything we have documented. Here are some glimpses of this inventory. You can see the blue color is showing the glaciers. Please next. You can see it is the very famous glacier Baltoro Glacier, which lies just at the K2, near the K2. In the upper side we have K2 over here, and this region is called the Concordia. So you can see in the past few years you can see how the ice flows over the glaciers. This animation has been made with the help of various kind of satellite imagery. So you can see how the glacier ice has been moving. You can see the debris cover, how different tributaries of glaciers are retreating, and sometimes they are growing, and it is showing that how it is looking like conveyor belt, which is taking its mass from the upper reaches to the lower reaches of the land. Oh, please next. Similarly, we also study the seasonal snow cover. You can see in upper part of the Pakistan, the snow melt started in October, and then until March we have the maximum snow cover, and you can see the temporal change of snow from March 28 to 18 next, and you can see the change in the ice during the summer season. You can see all the snow has been melted away, and only the glacier's ice has been left over there. Please next. Similarly, we also, during the past few years, we have been hearing about the GLOF events, glacial lake outburst flood, glacier surges, glacier collapses, or like the Gyari sector incident, which was basically the glacier collapse event. So we also monitor the glacier through satellite data as well as the field measurements. Please next. You can see how the glacial lakes has been developed in Pakistan. We continuously monitor the glacial lakes and how they changes in area and size, and if they are making vulnerability in the downstream areas, so we make prediction through the satellite remote sensing data. Please next. Okay, so with the help with the satellite data, we also use the field measurements to study the glaciers. During the past around 11 odd years, I
have engaged in conducting the research on glaciers. So the objective of this presentation is I am a geographer, so you can see how we can utilize our knowledge and study which we learned through this department, and how we can take it further in our professional life. So since 2010, we have engaged in studying the glaciers, and there are various studies which have been conducting. Please next, I will show you some slides. Here are some glimpses of our field expeditions. For the past 11 years, we have conducted 10 glacier expeditions in northern areas of Pakistan, and in around 15th above more than 15,000 feet. And we take the measurements from there, and which kind of measurements we take in the next slides you will see. Please next slide. We collected the information from the glacier bed. We measure how the ice has been melted under the provided temperatures. At every point of the glacier, we measure the melting. You can see the network of ice ablation. We drill the ice ablation stakes over the glacier surface, and then we measure the river discharge as well as the temperature over there to understand that what is happening onto the glacier and how the glacier has been behaving under the impacts of climate change. Please next. And then on the basis of this, we develop the models like the hydrological, glaciological models, which tells us and which helps us in forecasting the future flows of rivers and glaciers. Please next. Actually, here I am showing several studies, so just the few slides from each study. Similarly, it is not possible with the help of only satellite data to estimate the ice thickness or ice mass volume of glaciers, because we have to know how much ice is stored in our upper part, our region of northern region. So we also make the measurements with the help of aerial platforms. With the help of GPR, we measure how much ice is stored. In the video, I think you will see clearly. Please next. And these are some results. With the help of those studies, we have estimated the ice mass volume of the whole upper Indus River basin. Please next. Similarly, we also issued the paleoclimatic studies. Water is something which tells us the history. Even if it is in the form of the glacial ice, if it is even in the form of the tree rings core, or even in the lake sediment core. So how do we do it? I will show you in the next slides. Please next. Around 2 or 3 years back, we started the ice core drilling in Pakistan, in Karakoram region. And here you can see some of the equipment we used at the upper part of the glaciers at around 18,000 feet. We took our equipment over there, and then we dig the ice core from there. And what ice core tells us, it basically tells us that during the past 400, 500 years or even 1000 years, what has happened to the climate. Basically, the ice the air of that time, of the past times, of the paleo times, have been stored in the glacial ice, which has been trapped over there. So we extract the ice cores from there, we slice it down, and then we make the analysis in the lab, and then we can see that how was the aerosols over there, what is the chemical concentration for the past 500 years. So in the next slide, you see how. Please next. You can see the extracted ice core from the glacier, and we took it in the lab, and then we melt it down on the room temperature. Then we make several sort of analysis. We got various kind of data like the isotopes, chemical concentration, how much the carbon, black carbon is there, or other aerosols or other gaseous particles are there in the past 100 years or 500 years or even 1000 years. Please next. So it is the data for the last we extracted a core which was around 20 meters or 30 meters. It is not very deep, but with the help of that core, we have collected the data for the past 20 years, which is showing that how much ice has been stored or have been accumulated over the glacier for the past 20 years. And similarly, how the isotopes have been changes during that period of time. Similarly, we also collected the information of temperature over there, which shows us how the temperature varies during this period of time. Please next. You can see the black carbon, which is the main contributor in the retreating of glaciers.
or sea level rise. So you can see how it is changed, how its concentration has been changed for the last 20 years. Please next. Similarly, we also extract the cores from the lakes. From the bed of the lake, we extract the core which is concentrated on the sediments, and we also make the same process. We slice it down in different sections, and then we study how this glacial lake has been formed and what has happened in the past 4,000 5,000 year back, and then with the help of this data we can forecast and we can make remedial measures, I mean on the basis of our past information. Please next. So this is all about what we are doing and what geographers can how do we do it? I think we have 10 minutes, or if you don't have much time, then we can. Video. 30 minutes वाली चला। ये स्टडीज जो हमने की हैं तो उसकी कुछ हम सेगमेंट्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, किस तरह से हम करते हैं वहाँ पर ये काम। पहले हाइलाइट्स हैं, उसके बाद फिर पूरी डॉक्यूमेंट्री है। ये हम आइस वॉल्यूम ऑफ प्लेसेस की मैपिंग कर रहे थे, GPR वैली पर उसको माउंट किया हुआ है। ये ब्याफो ग्लेशियर के पास है। ये सतपारा लेक के ऊपर हम सेडिमेंट की बोरिंग कर रहे हैं। ग्लेशियर सर्च हुआ तो शिस्पर काफ़ी फेमस है, पिछले 3 साल से वो सर्च कर रहा है उसकी। और फिर ग्लेशियर मोरेन भी हम सैम्पलिंग लेते हैं, उससे हमें पता चलता है ग्लेशियर कब रिट्रीट हुआ, 200 साल पहले या 500 साल पहले। Glaciers are remarkable witnesses to the history of our climate and our environment. Through the centuries, they have recorded the heartbeat of our planet. The ice naturally holds a memory of the past atmospheric composition. However, for 2 centuries, nearly all of the world's glaciers have been facing an insidious threat. Glaciologists watch helplessly as thousands of years of precious data held inside the ice is lost. Before it is too late, a massive scientific project is being launched to save the last remaining portions of ice from our planet's largest, most symbolic glaciers. ये सारी फुटेज जो है हमारी ब्याफो और जो सराउंडिंग ग्लेशियर्स है नॉर्दर्न एरियाज में, उसकी हमने ली दी है, जो वीडियो में आपको नज़र आ रही होगी। ये वो आइस कोर है जिसके थ्रू हम स्टडी करते हैं कि ड्यूरिंग द पास 500,000 ईयर्स में क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से ये आइस कोरिंग की जाती है। तो उसमें अगर आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट हो तो आप देख सकते हैं। सर वी हैव 10 मिनट्स, सो हम लोकल जो पोर्टर्स हैं उनकी हेल्प लेते हैं वहाँ पर काम करने के लिए, और उनको अपने साथ लेके वहाँ पर जाते हैं ऊपर ग्लेशियर्स में। ये हमारी टीम है।
वहाँ पर हमें काफ़ी अर्से रहना पड़ता है, कभी 1 महीना कभी 1.5 महीना, तो उसके लिए होता है लास्ट ईयर के 1 वीक इसमें आ गया अच्छा, बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर ये आता है स्टडी करने के लिए कि हमारा जो इक्विपमेंट ऊपर लेके जाना होता है वो मैनुअली आप नहीं लेके जा सकते, आई मीन ऑन फुट। सो हमें फिर ये हेली वगैरह की फैसिलिटी अवेल करनी पड़ती है कि हम अपने इक्विपमेंट को वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकें। लेकिन हेली के लिए ज़रूरी होता है कि उसको पहले वहाँ पहुँच के अपना लैंडिंग पैड बनाना होता है, वरना उस पर वो लैंड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हमारा एक ग्रुप जाता है वहाँ पर लैंडिंग पैड बनाता है, और उसके बाद फिर हम लोग अपना मिशन स्टार्ट करते हैं, जो कि हेली पे सारा इक्विपमेंट और बाकी टीम वहाँ पर उस तरह से जाती है। स्टडी में आपको इसको दिखाने का मकसद ये है कि डाटा कलेक्शन कितना आसान है या कितना मुश्किल है, इसको ये समझना। रिमोट सेंसिंग से बड़ी इजीली हम डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो डाटा इंस्टीट्यूट डाटा हमें फील्ड ऑब्जर्वेशन के थ्रू चाहिए होता है या वैलिडेशन के लिए, उसको गैदर करना कितना मुश्किल है या उसके लिए क्या फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड होती हैं, थोड़ा सा हमें उसका आइडिया हो जाए। अगर हमने इस डोमेन में आना है तो ग्लेशियोलॉजी में ग्लेशियर्स को स्टडी करना है तो, या क्लाइमेट चेंज को स्टडी करना है तो। अब ये सारा जो सामान आपको नज़र आ रहा है, इसको ऊपर पहुंचाना है हमने, जहाँ पर हमने लैब इस्टेब्लिश करनी है। तो अब वो किस तरह से ऊपर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं।
ये जो हमने 18,000 फीट के ऊपर जो अपनी लैब को इस्टेब्लिश किया है, उसकी कुछ कैंप्स आपको नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर नीचे सामान ऊपर पहुँचाया जा रहा है ताकि उसको हम मेंटेन करके यूज़ कर सकें। अच्छा, ये हमारी सारी रिसर्च जो है बेसिकली हम चाइनीज़ के साथ कर रहे हैं। चाइनीज़ साइंटिस्ट हमारे साथ पार्टनर होते हैं जो हमें फाइनेंशियली हेल्प आउट करते हैं और टेक्निकली। अच्छा, आइस मेमोरी थोड़ा सा मैं बता दूँ आपको। आइस मेमोरी बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है जिसमें यूरोपियंस हैं और अमेरिकन्स हैं और चाइनीज़ और पाकिस्तानी हम लोग भी इसमें शामिल हैं। हम ये चाहते हैं कि आज से 100 साल 200 या 300 साल बाद जब ये आइस हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी, ग्लेशियर्स नहीं होंगे, लेकिन उस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी होगी, तो हम लेकिन उस वक्त उनके पास ये आइस नहीं होगी इसको स्टडी करने के लिए या पास हिस्ट्रीज़ को स्टडी करने के लिए। तो हम आइस कोर को एक्सट्रैक्ट करें मुख्तलिफ रीजन से और उसके बाद हम इसको एंटार्कटिका के अंदर स्टोर कर दें और हमारे आने वाली नस्लें आज से 150-200 साल बाद जब ये ग्लेशियर्स अवेलेबल ना हों उसको वहाँ से निकालें और फिर उनके थ्रू स्टडीज़ कर सकें और देख सकें कि पास्ट में क्या होता रहा है। अच्छा, ये वो लैब है जहाँ पर ये आइस कोरिंग होती है और ये आइस कोर जनरली 300 फीट से लेके 1000 फीट तक होती है। तो ये जो हमने आइस कोर की थी अराउंड 300 फीट थी। तो ये हमने वहाँ पर बर्फ़ के अंदर डिग करके ये बनाई थी लैब और यहाँ पर अभी एक्सट्रैक्शन हो रही है आइस कोर की और इसके लिए जो इक्विपमेंट है ये भी स्पेशली डिज़ाइन किया गया था जो कि उन -40 टेम्परेचर्स में काम कर सकें और प्लस इतनी डीप कोर को एक्सट्रैक्ट कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोर निकाल रहे हैं हम आइस के नीचे से। अच्छा, ये आइस कोर है जो एक पाकिस्तान में और इवन इंडिया ने भी अब तक आइस कोरिंग नहीं की है। तो ये फर्स्ट टाइम इस रीजन के अंदर पाकिस्तान में हुई है। तो ये पहली आइस कोर है जो कि निकली है। अच्छा, बस ये थोड़ी सी अगर देखना चाहें लाइफ कैसी होती है वहाँ की है। ये जो ग्रीन जैकेट ग्रीन लगे अगर गिलगित से हो मेरे ख्याल है यहाँ पर कोई तो वो शायद सोते कैसे हैं वहाँ पर, हमारे रूम कैसे होते हैं वो ज़रा देखें आपको आइडिया होगा। The room for 5 people. So you can see here, one guy can sleep here, even two. It depends. There is no kids and people in the room. We have prepared इस तरह से लेक सेडिमेंट कोरिंग इसी तरीके से होती है। उसका भी लंबा प्रोसेस है, उसको हम नहीं दिखाते फिलहाल। बस आखिर में आपको ये लेक सेडिमेंट कोर है जो कि मैं ये बताया कि पास्ट 44,000 और 5,000 ईयर बैक का डाटा हम इससे कलेक्ट कर सकेंगे।
get the nature is this drilling is अच्छा, ये फर्स्ट टाइम हमने यूज़ किया था GPR को। ये बेसिकली ग्राउंड बेस्ड GPR था, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे काम स्टार्ट किया था। ग्राउंड बेस्ड रडार के थ्रू किस तरह हम आइस की थिकनेस को मेजर कर सकते हैं थ्रू दीज एयरबॉर्न कैरियर। तो आप लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू। एक्सीलेंट है।